Namaste to everyone. Namaste to everyone present here. Thank you for joining. Today is 21st of October 2023. Today is 21st of October 2023 and it marks the 88th anniversary of the formation of first Indian government. This day in 1943, one of India's greatest sons, Netaji Subhash Chandra Bose, announced the formation of Arzi Hukumat-e-Azad Hind, or the Provincial Government of Free India, in Singapore and declared war on the British Empire. Today we are here for the commemoration of Arzi Hukumat-e-Azad, that is the Provincial Government of Free India. We have two distinguished speakers with us who will be enlightening us with their vast knowledge on the subject. Chandrachud ji is with us, who is an author, researcher, and commentator on Chandrachud ji is an author, researcher, and commentator on history, economics, and environment, having graduated from Vishwa Bharati and the University of Sussex. Also, we have with us Rahul Kumar ji. Namaste, Rahul ji. Sorry, Rohit Kumar. Sorry. Rohit Kumar ji, who is serving as an assistant professor of history in Jamia Millia. He graduated from University of Delhi and did his MA and MPhil in ancient Indian history from JNU, and also is currently pursuing PhD. So let's start. I would like to begin with Chandrachud ji. Namaste, Chandrachud ji. If you could please tell us about the historical underpinnings of the formation of Arzi Hukumat-e-Azad Hind, the Provincial Government of Free India. If you can narrate the historical underpinnings, kindly. Namaskar. Thank you for having me on your show. Firstly, let me correct the mistake which a lot of people make, and that is, it is not the provincial government of Azad Hind, it was the provisional government of Azad Hind, or provisional government of Free India, Arzi Hukumat-e-Azad Hind. So, I mean, I won't go into the history because it's quite well known. Netaji Subhash Chandra Bose reached Southeast Asia, the Penang. He reached Penang, I think, around May 1943, and from there he went to Tokyo, held talks and negotiations with the Japanese government, and how he convinced Tojo, the prime minister at that time. All these are well-known facts. So the historical underpinnings is, I mean, how do I describe the historical underpinnings? He had a plan when he went to Europe, when he left India and went to Europe. He went to Germany, he went to Berlin through Russia. But I mean, mostly people forget that his destination when he left home in January 1941 was not Berlin, it was Moscow. But the Russian government did not cooperate with in Afghanistan, when in Kabul, when he went, tried to meet them at the embassy, they did not cooperate. And with the help of Bhagat Ram Talwar, he approached the Italian embassy, and the Italian and the Germans cooperated and took him to Berlin. So there he tried his best to utilize the situation and build a kind of quasi-government. He was given the diplomatic status. So a kind of quasi-government in exile, the Free India Center, which it came to be known as, and also raised an army, the Indian Legion, from the prisoners of war, from the British Indian Army, captured in the African theater, and tried his best to take things forward. But it was not possible. I'm sorry, just give me 1 second. Teach. But it was not possible beyond a period. He wanted a declaration of independence from the Axis powers, which they repeatedly, although Japan and Italy was ready to issue the declaration of independence for India, and for a period, even Hitler was agreeable to it. And the German foreign minister, Ribbentrop,
was completely in its favor. But due to Hitler's own strategic interests, his dilly-dallying and the reverses in the Russian front, that kind of put water through water, poured water on his plans. And things were not moving. So he wanted at that time, then Pearl Harbor and Singapore happened. And clearly the emphasis was on the southeastern theater of war. And that's where action was happening, and that was closer to home. So obviously he wanted to go that. And to that, the German government completely agreed. And uh, they provided all help to shift him. The big question at that time was how to shift him to southeastern region, because it was a huge distance and going by plane was not a possibility. Ship was out of question. So submarine came up as an alternative, and it took a long time to determine the route and his safety and everything. So it was anyway, it was a hugely risky journey, and 90 days journey in submarine. In my opinion, as far as I know, it's the only case where a head of a state, even a provisional state, was transferred during the war in a submarine from one continent to another continent. So when he reached, there was a background to the movement in Southeast Asia. After the conquest of Singapore, General Mohan Singh, with the help of Fujiwara, had begun the process of setting up an army, and a completely Indian army, and the Indian National Army was thus born. But it was not an easy journey, and the idea of utilizing the INA at the initial stages was very different from what it came to be later on. So the idea first was to use the INA mainly for propaganda purpose, and wherever small bits and pieces of work that the Japanese army needed to insert them in various zones. So it was, although it was a good thing in terms of publicity, propaganda, and moral values, it was not very important in the whole scheme of things as designed, as foreseen by Japan. But after that, it is well known, the story of the fall or breakup of the first INA is well known. And because of the clash between Ras Behari Bose and Mohan Singh, it came to an end. Mohan Singh was arrested. Niranjan Singh Gill, the right-hand man of Mohan Singh, was arrested. So by the end of 1942, it had come to an end, and early 1943, Ras Behari Bose was busy reorganizing the INA and trying to make the best of the situation. It was at that time that he finally got to know that Subhash Bose was being transferred to Southeast Asia. So the process began for receiving him and keeping the movement alive till he reached there. So when Netaji reached Southeast Asia, when there were a few things that he wanted to do immediately. First, obviously, was to resurrect the army, but not to keep it restricted only from the prisoners of war of the British Army, mainly for the 1 by 14th Punjab Regiment. But he moved for total mobilization. He gave the call for total mobilization. That is, he put the onus of freedom on all Indians, including civilians, in the entire region, and asked them for money, material, human resources, human power, everything. He gave the call that if you are interested in your freedom, in India's freedom, then you cannot sit back. You have to come forward, give everything, sacrifice everything. But strategically speaking, first thing he did was to extract from Tojo complete reassurance of unconditional support from the Japanese army, Japanese government, unconditional support for the Indian National Army. Second, the second thing that he wanted from there was equality in status. So to get equality of status, only a small army was not sufficient. It had to be expanded. So here was the call for mobilization, which helped him expand the army. But only an army was not enough. He needed to have a government. So he
proposed the idea of forming a provisional government of free India and got recognition for that government from 9 countries. So it was an internationally recognized proper government. Now, from a subordinate position, after his arrival, after Netaji's arrival in South Asia, the provisional government of Azad Hind and the INA got the status of allied government and allied army. It was no more an army to be used by the Japanese, but it became an army that would have its own independent plan. Of course, it had to work with Japan because it was totally dependent on them. Money, material, everything was being provided by them, not to the extent that was required or desired, but all kind of help was forthcoming from the Japanese government. And a number of times the Prime Minister Tojo declared his unconditional support, whether within the Japanese parliament or outside. So Netaji's arrival kind of galvanized the Indian population in the Indian diaspora in the entire region, and created a spirit that was unthinkable. There were various factions. It was not a homogeneous movement. The previous movement, the Indian Independence League, it had various branches. There were different groups within these regions. In Malaysia, there was one group. In Thailand, there was one group. In Japan, there was one group. And they did not always look eye to eye. They were not always in agreement. I mean, so much so that when the idea of the INA was formally proposed in the Bangkok Conference in 1942, there was a big resistance from a lot of these regional leaders, because they felt that creating an army, building an army, and going in an armed offensive was against the Gandhian idea of non-violent movement. Mm-hmm. So they tried to put pressure that before taking any step by the INA, or before mobilizing the INA, or before taking the INA into the front, they needed to have an explicit permission from the Indian National Congress. But by that time, it was no more possible, because of the Quit India movement, the entire Congress leadership was in jail. They were in prison. None of them were available, and it was a time. But the spirit of this resistance to the INA was there. So Netaji had to negotiate with that antagonistic attitude of quite a few significant leaders. And then there was, of course, the psychological barrier which he had to overcome, which he could more successfully than Ras Behari Bose or Mohan Singh could, about not being subordinated by the Japanese, that he was an equal. So his stature was such that there was unqualified support from all Indians towards him. They looked upon him. They were ready to give up their lives for him. So that kind of leadership he was successful in providing in that region. So he wanted, at the same time, he started negotiating for a piece of land which belonged to India, where he could, which his government could claim as its own. So the Japanese Navy reluctantly, after much negotiation, hard negotiation, agreed to hand over the administration partially of the Andaman and Nicobar Islands. It was a very important strategic area for the Japanese army, Japanese Navy. So they did not agree. Obviously, it was not possible for them to just give up everything, but they agreed that the administration of the islands would be conducted by the INA. It would be supervised by the provisional government of Azadi. So Netaji could post a governor for the area there. And then, of course, there was the question of the relation between the Japanese army and the INA army. As I said, it had gained the status of an allied army. Now, but in the actual battlefield, the practical question was, who will give the command? Who will obey whom? So Netaji was a hard negotiator. So he had always had this idea, this question of India's self-respect, its status as an independent power in mind. So he would not budge an inch, giving up or compromising anywhere. So it was agreed, the protocols were agreed, where they would
Indian soldiers and Japanese soldiers would salute each other's at the same time. So all these small things, the big things, everything were meticulously planned. The provisional government was formed with different ministries because the evacuated areas in Burma and other countries in that area, in that region, which were under Japanese occupation. But Indians who had fled from that region, thousands and hundreds of thousands of people had fled from Burma and surrounding areas. So all these were the charge of these areas were handed over to the INA, and so a complete government and an army. That is what he could create in a very short span of time. He reached in May. In by October, he had announced formation of the government. He had a government, and by that time, the army was also ready. That is, the first division was ready. So it's unknown in the history of the world where in such a short span of time a government and an army could be erected by a non-military person. He was a statesman of unparalleled capabilities, and but he was not a military leader. I mean, as such, he was not a military leader. So there were, of course, questions. There was always question mark. But there also he kind of excelled and in creating the army and putting it in the front. So that is in brief. I mean, I don't want to go into a long lecture, but that is in brief the historical context. Okay. Thank you, Chandrachudji. Let's move to Rohitji. So Chandrachudji stated the underpinnings which led to the formation of Hukumat-e-Azad Hind. So, okay, so the provincial government got erected, and but I need to ask Rohitji, what was the significance of the formation of Azad Hind government? Did it create any impact internationally? You know, it did create an impact within the nation, but did it create an impact internationally? So, if you can kindly answer. Is Adarji. So the point is, the Azad Hind Fauj has generated a vast support from those immigrant Indians who were residing in Southeast Asian countries and other sides, and it also helped Netaji. And that particular support has also helped Netaji to create and construct the INA. And in addition to this, if we look into on the Indian soil, then we will find that the entire Indian national movement after the 1943 or 44 has largely been carried out by the INA's legacy, which has later been acquired by the Congress. And if we go to the writings of Nehru and others, then they have also pointed, particularly Sumi Sarkar has also pointed out that the freedom of India has largely been carried out by those legacy which has been constructed and created by the Red Fort trial. And in addition to this, we can also find that this legacy of INA and the Red Fort trial has also played a crucial role for Congress to counter the Muslim League and its slogan that Islam is in danger and creation for the Pakistan. And in addition to this, we can also see that after the release of Congress leader from the recent post Second World War phase, the Congress has lost its support on Indian soil. Okay, so what they did, they utilized the Red Fort trial and the legacy of Netaji and INA in order to gain that particular support. So Nehru and Gandhi has multiple times has claimed that the legacy of INA should be transferred to Congress in order to generate those supports which Congress has lost. And even Jayaprakash Narayan has also at one place has pointed out that Congress was an organization which has only two functioning. At the one side, it will generate movement, and in the free time, it will either carry out either carry out a creative works or will focus on other tasks which are not revolutionary in that manner. So the role of INA has been largely can be looked in two aspects. Firstly, it helped Congress to counter those ideas and notions which those ideas and sentiments which Muslim League was trying to generate in order to support their idea of creation of Pakistan. And secondly, it also helped Congress to establish and generate
to establish and penetrate the nationalist idea into the British Indian Army, which has largely been put outside the nationalist message before the 1942. And we can also look after 1940s. Congress has continuously demanding that national government should be formed, and that national government should have defense in its hand. And we have multiple reference in which British government and the Cripps mission also has rejected this particular demand. And Congress, by utilizing the INA trials and legacy of INA, has also pointed out the INA is in true sense represent the concept of Indian National Army, and that particular legacy has also helped Congress to generate this sentiment in British Indian Army, and also it also helped them to politicize that British Indian Army, which has largely been put outside the Indian national movement before the 1940s and all. So the mutiny of 1946-47, so these mutinies has helped Congress to penetrate the message that if you look into the writings of Nehru, then you will also find that it also helped Congress to express the message that it can also it can also use the violent method in order to force British authorities to generate major constitutional reforms in India. Thank you, Rohit. So, Chandrachud ji, I need to put a question which is a cliche, you can say, but a criticism which comes in the way of Netaji Subhash Chandra Bose is regarding joining hands with Axis powers. Hitler, we all know, is a black figure. We also know that what he did with Jews. But so, how do you see Netaji joining hands with the Axis powers? How do you see Netaji joining hands with Hitler? So this is a common question. You might have answered this several times, but if you can answer this once more. Yeah, it is a cliched question, and when you ask this question, you have to keep in mind where this question comes from. Who asks this question? A question does not float in the air. It's not an abstract sui generis thing. Somebody asks that question. Somebody thinks in that line. So it has come from those who have opposed Netaji in every possible way, namely the Congress and the left parties, especially the Communist Party of India. So I will not give my logic. Tonight, I mean, I have written about it extensively. I've defended his work, his decision in the biography that I've written, which was published last year. What I will tell you is because that criticism comes from Congress Party, I'll tell you a small anecdote. Now, in the Constituent Assembly, when the debates were going on and the framing of India's constitution was going on, I wouldn't say India, it was the Congress leadership, particularly Nehru, who decided to join the British Commonwealth. Now, to accommodate India, they kind of removed the term British because it was too thorny. So they agreed to remove the word British and just called it Commonwealth of Nations. So Nehru went to UK, to London, signed the agreement, came back and informed the Constituent Assembly. There was, and remember, the Congress Constituent Assembly was largely comprised of congressmen. At that time, the Constituent Assembly the members were elected by the provincial governments, which were largely Congress governments. Congress had hugely won the elections on the wave of the INA trials and the naval mutiny, the Royal Indian Navy mutiny. So they had utilized violence. They have exploited violence while taking a moral position against it. So it's a very duplicitous position that the Congress had taken, the Congress leadership had taken. Anyway, the Constituent Assembly was full of congressmen, except a few who were particularly chosen
to assist because they were legal and constitutional experts. They were chosen to help the process of the constitution making. Now, when Pandit Nehru came back from UK and announced in the Constituent Assembly that he had agreed to sign the treaty to join the British Commonwealth, the big question that came in front of him was that how could you join the Commonwealth where South Africa is an equal member? Hitler did not kill a single Indian. South Africa was torturing hundreds and thousands of Indians, and the Congress was running a movement before India's independence against the South African government, helping, assisting, aiding the Indians in South Africa. And after Indian independence, as as a country's government, there was India took the issue to the UN. So you are actually joining a forum, shaking hands with a person who is torturing your people, going against your people. And Nehru was put in front of that question. And obviously, he did not come back with the agreement to ratify it or ask the opinion of the Constituent Assembly. It was a fait accompli. It was done, and he just informed that the Constituent Assembly had to approve it. So they did it anyway. But the question was, how did India decide to side with South Africa? Pandit Nehru's long explanation was very interesting. And he answered all these criticisms in every manner possible, which you could just substitute South Africa with Germany and Italy. That what a country is doing within its own boundaries, it is their business. It may be doing 1,000 things which we don't like, which we abhor. But in international relations, we have to work with powers. We need help. They will help us. We will help. So, of international cooperation, we have to look at our interest. We cannot judge a country by what it is doing within its own bounds. This is a principle which was clearly laid out by Subhash Bose as the Congress Rashtrapati in 1938 in his presidential address, and repeated again in 1939. That what a country is doing is its own problem within its own boundaries. We have to look at our interest. We are not the moral superior beings, divine entities appointed by God to sit a judgment. We have to look at our own interest. His clear word, his phrase was, India must think of her interest first. This is interestingly what came back as a electioneering slogan in 2014 as India First. So that was a clear phrase which gave his direction of thinking. Having said that, was he not disturbed by what was happening in Germany? He was. He had a lot of Jewish friends who were very dear friends, and they have recorded his reaction, his advice to them at that time, even before the full-scale persecution of Jews started. Even before that, how he advised them, how he looked at the German policy, that was clear. He was absolutely against that. But the full scale of what was going on was not known to any of them, not to him, not to anybody else, because they were kept in an isolation. They were working on India's independence. They were not involved in Germans' domestic politics and actions that were being taken. And nobody, even the Allied powers, did not come to know about the scale of this persecution before the end of the war. So, I mean, obviously there was a broad idea, there were information coming out that Jews were being persecuted and all. Subhash Bose was against it. But would he sacrifice India's interest, India's independence because of that? No country ever in international history, in the history of the world, has ever done that. Sacrificed its own interest for a larger moral cause. Those who criticize from the US, those who criticize from the UK today, I mean, it is so well documented, the involvement or the alliance of the US throughout history with dictatorships, their ability to set up dictatorships and ruthless regimes
how they have cooperated and allied themselves with themselves, it is well known. I mean, so anybody who is pontificating on that should first look into the mirror. It's a very childish argument that, oh no, he should have taken a moral position. Brother, I mean, what moral position are you talking about? When as late as when Tony Blair was the prime, no, I'm sorry, the conservative prime minister. I think it was about 7 8 years ago, when he was the prime minister, and he was questioned by BBC 4, Channel 4. It was a hard interview because Britain had at that time supported the membership of Saudi Arabia in the UN Human Rights Council Commission, Human Rights Commission. So the question was, knowing the human rights records of that region, of that area, how could Britain support that? How could Britain have a formal relationship knowing the human rights records? And the British Prime Minister, in a very clear, articulate, unambiguous statement, he said that they provide us help and we need their help. It is not for us to judge what they are doing inside their country. So we need their help, they need our help, we will cooperate. So what is absolutely fine with everybody in the world, everybody else in the world, how does that make Subhash Bose's decision any, I mean, a standalone or isolated case or something to be looked down upon? He did what he did in India's interest, and at that time, India's freedom had to be earned. The British had to be driven away from the country, and he took help from the countries which gave India help unconditionally. So there is no ifs and buts here. It's a clear clear principle of international diplomacy, which is followed by each and every country throughout history without exception. So this question is infantile. This whole line of argument is infantile, and coming from the left, particularly from the community, it sounds very, uh, I mean, even more infantile, because they have taken their dictats from uh, country like Soviet Union, where Stalin has on record been responsible for more deaths than the the Jewish Holocaust was. They have followed the line of Mao Zedong, where everybody knows what happened during the Cultural Revolution, the subsequent years, how things have been run in China. So, I mean, one has to either be completely moralistic or accept uh, what they are doing, even they are doing, as the standard principle. You can't have a double standard. You can't do the same thing and say it's all fine, it is done in the interest of an ideology or for our country, and then criticize Subhash Bose for doing the same thing. Okay. Thank you. Thanks a lot, Chandrachudji. So, British Prime Minister in 1947 has had categorically stated that the Congress government has minimal impact on their decision to leave India. They The left Gandhian movement, India. not the Congress, but the Gandhian movement. The Gandhi movement, of course. They left India due to the consequences of what Netaji Subhash Chandra Bose led Azad Hind Army's campaign had done. But after the transfer of power on August 15, 1947, we saw something different. The efforts of Netaji and thousands of freedom fighters were undermined, and the peaceful song "De Di Hame Azadi Bina Khadak Bina Dhal" went loud. What are your views on this, Rohit ji? I want to know from you actually. What are your views? So, do you feel the efforts of Netaji were undermined, or do you think we are, exaggerating? So basically, I would like to start. I would like to start answering this question with my own experience, which I have faced in academia. So I remember when I joined an institution for teaching, and I looked to the syllabus. Then I found that all the books which we generally study in our curriculum were largely written by a particular section of historians, and those historians who are writing the counter narratives are not included in the in this in the school in the college syllabus.
सो पहले मैं देखना होगा कि इंडिपेंडेंस के बाद जो कांग्रेस ने एक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन पे कब्जा किया और उन्होंने लेफ्ट विंग को भेज दिया एकेडमिक इंस्टीट्यूशन की तरफ, और उन्होंने एकेडमिक इंस्टीट्यूशन पे कब्जा किया। और जब कांग्रेस ने राजनीतिक संगठनों की कमान संभाली, तो उनके साथ उन्होंने क्या किया कि अपनी पोजीशन को एकेडमिया में लेजिटिमाइज कराने के लिए उन्होंने बहुत सारे कोर्ट हिस्टोरियंस को रखना शुरू किया, जिसका अरुण शौरी जी ने इसका बहुत अच्छे से लिखा है एमिनेंट हिस्टोरियन में। और उन्होंने जो आधुनिक भारत का इतिहास है उसको पूरी तरह कांग्रेस के मूवमेंट के रूप में दिखाया है कि कांग्रेस के अराउंड ही सारे पूरा नेशनलिस्ट मूवमेंट हुआ और उसी से ही हमें इंडिपेंडेंस मिली है। सो आप किसी भी यूनिवर्सिटी का करिकुलम है, अगर आप उसको उठाएंगे तो आपको दिखेगा कि हर करिकुलम में ऐसी सारी की सारी ऐसी किताबें हैं जो ये दिखाएंगी कि जो इंडियन नेशनल मूवमेंट का मतलब है सिर्फ कांग्रेस पार्टी या कांग्रेस के लीडर। सो वो लोग क्या करते हैं, जितने भी उसके बियॉन्ड मूवमेंट है उसको वो कभी दर्शाते नहीं है। और कई बार जैसे हम लोग इंस्टीट्यूशन में जाते हैं, छात्रों से बात होती है, तो एक सवाल बहुत उभर के आता है कि क्या सर ऐसी कोई किताब है जो हमें काउंटर नैरेटिव प्रोवाइड कराए। जैसे HD शेषधारी जी का किताब है द ट्रेजिक स्टोरी ऑफ पार्टीशन, तो उसमें हमें एक काउंटर नैरेटिव मिलता है। इसके अलावा बहुत सारी ऐसे किताबें हैं जिनको एकेडमिक करिकुलम में स्पेस ही नहीं दिया गया। इसमें बहुत सारे ऐसे रेवोल्यूशनरी लीडर्स, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन का जिक्र है जिन्होंने नेशनल मूवमेंट में कंट्रीब्यूट किया, बट उनके मूवमेंट्स को, उनके कंट्रीब्यूशन को कभी भी एकेडमिक करिकुलम में जो किताबें यूज होती हैं उसमें कभी भी उनको इंक्लूड नहीं किया गया है। पहली चीज ये। दूसरी बात ये कि जब आप इंडियन अकेडमिया की बात करते हैं तो इंडियन अकेडमिया में जैसे हम लोग जब फॉरेन में जैसे जो हिस्ट्री पढ़ा जाती है वेस्ट में, वहां हम देखते हैं कि मार्क्सिस्ट पैटर्न ऑफ हिस्ट्री राइटिंग अब बीती हुई बात हो चुकी है, सबाल्टन्स आ चुके हैं और भी नए नए काउंटर्स आर्गुमेंट आ रहे हैं। बट इंडिया में हम लोग क्या करें, इंडिया में अभी भी हम लोग एक मार्क्सिस्ट फ्रेमवर्क से जुड़े हुए हैं, और वो मार्क्सिस्ट फ्रेमवर्क को तोड़ना इतना ज्यादा मुश्किल हो गया है इंडियन स्कॉलर्स के लिए, क्योंकि उनके पास कभी ना तो ऐसी राइटिंग्स अवेलेबल है जो उनका काउंटर आर्गुमेंट प्रोवाइड करें, ना तो उस तरह की एकेडमिक फ्रीडम अवेलेबल थी पहले जो उनको उनकी राइटिंग्स को परमिशन दे। तो हिस्ट्री को लेकर जैसे जो जो इंस्टीट्यूशन बने हैं, पर्टिकुलरली इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस, इट इज लार्जली डोमिनेटेड बाय द मार्क्सिस्ट स्कॉलर्स। So you have no proper permission to present your legitimate facts and writings which will counter their set narratives. तो जब आपके पास ऐसे फैक्ट्स है, आर्गुमेंट्स है, तो आप उसको वो लोग एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, उसको लेजिटिमाइज नहीं करेंगे। बट ये जो लेजिटिमेसी है, जो इस इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस जैसे संगठन जो इसको अपनी अथॉरिटी मानते हैं, इसको अपनी जागीर मानते हैं, इसी लेजिटिमेसी के नाम मिलने के कारण बहुत सारी जो राइटिंग्स है उन्हें आज तक कभी सिलेबस में या करिकुलम में स्पेस नहीं दिया गया है। खुद जहां से मैं आता हूँ, एक यूपी का एक छोटा सा विलेज है, उसके पास एक जगह है अशरफपुर। तो एक बार मैं ICHR में गया और मैंने वहाँ एक किताब देखी, और उस किताब के अंदर बहुत सारे रेवोल्यूशनरीज की लिस्ट थी। तो मैंने देखा कि मेरे गाँव के आसपास ऐसे बहुत सारे विलेजेस हैं जहाँ से बहुत सारे रेवोल्यूशनरीज निकले थे, बट क्योंकि मैं खुद उस लोकेलिटी से, मुझे पता ही नहीं है कि वो रेवोल्यूशनरीज मेरे यहाँ से थे। और मुझे क्यों नहीं पता, क्योंकि आज तक ना तो वो हमें बताया गया और ना ही हमें दिखाया, मतलब ना ही हमें पढ़ने को मिला उनके बारे में। और वो क्यों नहीं मिला, क्योंकि आपने कभी भी उन लोगों को किसी भी एकेडमिक स्पेस में, एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में स्पेस प्रोवाइड ही नहीं कराया। और आपने पूरे इंडियन नेशनल मूवमेंट को कैसे कैरेक्टराइज किया है, आपने कैरेक्टराइज किया है इंडियन नेशनल मूवमेंट का मतलब क्या है, कांग्रेस का मूवमेंट। और नेताजी के मूवमेंट को, नेताजी की जो लेगेसी है, जो उनका मूवमेंट है, उनको आपने बोल दिया कि वो सिर्फ एक क्विट इंडिया मूवमेंट का पार्ट था। और INA के कंट्रीब्यूशन क्या है, क्विट इंडिया मूवमेंट का पार्ट है। नेवल म्यूटिनी क्या है, क्विट इंडिया मूवमेंट का पार्ट है। एंड द एंटायर कांग्रेस पार्टी हैज फोर्स्ड ब्रिटिशर्स टू लीव इंडिया। सो पर हम लोगों को ये देखना पड़ेगा कि ये INA की लेगेसी ही थी, जिसके कारण नेशनलिस्ट डिस्कोर्स है, नेशनलिज्म जो है वो ब्रिटिश इंडियन आर्मी में पेनिट्रेट हुआ, और जिसने ब्रिटिशर्स के ऊपर ये दबाव बनाया कि वो इंडिया को छोड़ के जाए। पर इस तरह के जो नैरेटिव्स वो आपको एकेडमिया में नहीं मिले, क्योंकि मैं भी एक एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री का छात्र हूँ। तो कई बार ऐसा होता है कि हम लोग एक दूसरे काउंटर आर्गुमेंट ढूंढते हैं राइटिंग्स के अंदर, पर इंडियन राइटिंग्स में हमें काउंटर आर्गुमेंट्स मिलता ही नहीं है। एक सेट डिस्कोर्स चला रहा है हिस्ट्री में, वही हमें पढ़ने को मिलता है। और अगर हमें काउंटर नैरेटिव्स ढूंढना है तो हमें वेस्टर्न राइटिंग्स की तरफ देखना पड़ता है। और जब तक इंडियन हिस्ट्री में एक आइडियोलॉजिकल स्पेस जिसकी हम लोग बात करते हैं वो प्रोवाइड नहीं होता, तो हिस्ट्री में
हिस्ट्री में नए आइडियाज को या नए जो पैटर्न्स हैं उनको एमर्ज करने में, या जो लोग जिनको आज तक स्पेस नहीं मिला हिस्ट्री राइटिंग में, उनको स्पेस दिलाने के लिए एक एकेडमिक फ्रीडम बहुत जरूरी है। दूसरी चीज क्या है कि जो हमारा सिलेबस है उसको बहुत ज्यादा इंक्लूसिव बनाने की बहुत बहुत जरूरत है, क्योंकि सिलेबस जो है वो अपने नेचर बहुत एक्सक्लूसिव है। कई बार मैं देखता हूँ कि कई जो छात्र हैं जो मास्टर से संबंध रखते हैं, उन लोगों के लिए हिस्ट्री का मतलब डिफरेंट है। और जो छात्र दिल्ली से संबंध रखते हैं, जो मेट्रोपॉलिटन एरियाज हैं, उनके लिए हिस्ट्री का मतलब कुछ और है। तो कहने का मतलब क्या है कि जो इंडिया की हिस्ट्री लिखी जा रही है वो सिर्फ मेट्रोपॉलिटन एरिया से लिखी जा रही है, और मेट्रोपॉलिटन एरियाज में जो हिस्ट्री लिखी जा रही है वो अपने आप में बहुत ज्यादा एक्सक्लूसिव है। और एक्सक्लूसिव वो इसलिए क्योंकि उसको एक पॉलिटिकल पेट्रियाइजेशन प्राप्त है, एंड इट इज लार्जली बीन कैरिड फॉरवर्ड बाय द कोर्ट हिस्टोरियंस। थैंक यू रोहित जी, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण एक विषय उठाया है कि हमें एक एकेडमिक रिफॉर्म्स की जरूरत है, क्योंकि लेफ्ट ने एकेडमिया को जकड़ रखा है। और ये मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण चीज आपने उठाई है कि एकेडमिक रिफॉर्म्स होने ही चाहिए, नहीं तो फिर हमें सही हिस्ट्री फिर ज्ञात ही नहीं होगी। तो धन्यवाद इसके लिए। और द लास्ट थिंग which I want to ask both of you and also to our audience, is regarding the date of independence. So which date you know is more relevant to be celebrated? I might go, it might look bizarre, but which date is more relevant to be celebrated as the Indian Independence Day? Which date should be credited with the Indian Independence Day title? 15th August or 21st, October, the transfer of power, or the, so kindly, one by one, you can both answer. So first, we can go with Chandrachud ji. Uh, Actually, it's related to the question that you asked, your previous question. Uh, रोहित जी ने जो बोला, तो that is an inside view of the academic scene. And in certain aspects, I consider myself lucky that I am not a professional academic historian. I'm just an amateur, and I have the freedom and liberty to look into all sources and consider everything and put forward a considered view and in front of the readership for them to make up their mind. अभी इंडिपेंडेंस के लिए आईएनए का क्या रोल था, गांधीयन मूवमेंट का क्या रोल था, दो बहुत अलग चीज थे. Gandhian movement or INA did not go hand in hand, because if you look, the critical years started from 1939 when the Second World War started. तो Second World War जब शुरू हुआ है तब तक सुभाष बोस had been expelled from Congress and he had formed Forward Bloc. तो उनका जो political strategy था, it was very different from the Gandhian Congress strategy. He was trying for a mass uprising, mass upheaval, and organized uprising within India, and he was utilizing the revolutionary network to create that kind of impact. ये किसी और को समझ आए ना आए, ब्रिटिशर्स को समझ में आया था. So he was thrown into jail by 1940 July, and obviously the process that he started could not be completed. तो सिर्फ सुभाष बोस को नहीं, उनके सारे एसोसिएट्स को भी जेल में डाल दिया गया उस टाइम पे, जबकि पूरे गांधीयन हाई कमांड वर फ्री एंड दे वर doing their own style of politics. But उसमें conflict क्या था, main conflict क्या था? In 1939, Subhash Bose recommended that the British Raj be given an ultimatum of 6 months to quit India. An ultimatum of 6 months. And the whole Gandhian leadership fought it tooth and nail, including Pandit Nehru. All of them felt that the time was not right to give such an ultimatum to the British government, particularly when the war had started and nobody in the Congress wanted to embarrass the British. It sounds very, unreal. It sounds fantastic to even conceive that idea that the Britishers who has been sucking the blood of our national life for 150, 200 years, we don't want to embarrass them. Why? Because they somehow
Although they have been sitting on our chest and sucking our blood, they somehow represent democracy. So that was the thinking at that time of the Gandhian leadership. This unreal. It sounds almost unreal. So that thing, Netaji constantly uh, insisted that Gandhiji start a non-violent, be it non-violent, but a mass non-violent movement, something like the non-cooperation movement, something like the civil disobedience movement. But Gandhiji was not in favor. He after a lot of negotiation, after a lot of haggling, he was decided to start an individual satyagraha, where one person will go to the market, shout slogans, or carry a poster and get arrested. So, I mean, I don't have words to describe that charade. So, what does it mean? It didn't have any impact. Leaders were getting arrested. After 7 days or a month, they were getting released, and things continue. And during this whole time, they constantly negotiated with the British that give us some more power, give us some more power. Okay, form a national government, as if by their saying the British government, which was in the middle of a war and which was constantly denying in clear terms that we will not do anything right now because we are in war. Nothing is possible till the war finishes. We will consider your demands at the end of the war. So, but this was very clear. The Cripps mission came. Why? The Cripps mission did not come in response to Congress's movement or Congress's activities. The Cripps mission came because of the fall of Singapore. After Singapore fell in February 1942, that is when Churchill decided to send Cripps. And when Cripps came, it was sabotaged in every possible manner. Congress haggled for some power, and the talks broke down over the position who will take the whether an Indian will control the defense secretary's position in the Viceroy's Executive Council. After that, the Quit India movement. The Quit India movement was announced by Gandhi. It had no concrete plan. There was no plan as to what Quit India movement was going to be. What were people going to do? All Gandhi told them that consider yourself free. I mean, that is the language of Gandhian politics, which has done a huge harm, huge damage to our national consciousness and our national political language. We always go beating around the bush, say things which we don't mean, and which we will never follow up in action. So anyway, there was no plan of action because, like civil disobedience movement, Gandhi had hoped that the viceroy will get in a dialogue with him. They will discuss, and he will get some beneficial uh, points from the government. The government will cave in and give some concessions. Did not happen. The government was just not ready. They were prepared. The Within a few hours of the Quit India declaration, everybody was rounded up and thrown into jail for the next 3 years. Nothing, they could do nothing. The underground movement that started after this, the violent movement that started, was absolutely non-Gandhian. It had nothing to do with Gandhi's Quit India idea. The movement, whatever he had thought about the Quit India movement, it was far removed from that. There were two principles of a Gandhian movement. Firstly, it will have to be non-violent. Secondly, it cannot be an underground movement. The Quit India movement, which actually had an impact, was both of these. It was extremely violent and it was underground. It went underground after the initial backlash. People were killed. People were machine gunned by the British Army, Indian Army. Indians fired the guns under the orders. So by the end of the year, the Quit India movement was over. But what did the British intelligence find? The British intelligence found that people were actually looking forward to the Japanese invasion, and they had been listening to Subhash Bose's broadcast from Germany. And a lot of them actually believed that Subhash was coming to Japan and he would lead the attack of the Indian National Army. Those who knew. The Socialist Party actually started talking about it, and that was the reason why they fell out with the main Congress leadership and the Communist Party.
So there was a fallout between them because the Socialist Party under Jayaprakash Narayan had opposed Subhash Bose when Subhash was talking against Gandhi, when Subhash was building a parallel movement. Jayaprakash had opposed him. But just before Subhash was to leave the country, Jayaprakash wrote him a secret letter, which came out many years later, where he admitted that he was wrong. Jayaprakash Narayan was wrong, Subhash was right, and he wanted to work with Subhash. But it was too late. There was no more time. So that was a Quit India movement. Nothing happened in the subsequent years. Everything was quiet. But it was Wavell who foresaw and wrote to Churchill and the Secretary of State, Linlithgow, sorry, not, yeah, Linlithgow, that after the war ends, and this is a time when it wants to give credit to Wavell for his foresight, that the war was still at its peak. Nobody knew when it was going to end. Nobody knew what was going to be the uh, result of the war, how badly each party was going to be damaged. But it was 1944, around mid 1944, when he started the process. He started talking to the Secretary of State. He started writing to Churchill in October that we have to be prepared to give a chunk of power, transfer a chunk of power to the Indian hands, because when the war ends, those millions of Indian soldiers whom we have recruited will be recommissioned. They will come back and there will be a chaos. The wartime industry, which we have funded, they will run out of funds. They will run out of money. There will be a lot of unemployment and there will be a lot of unrest throughout the country. And we have to be prepared, because if we don't prepare now, all these leaders who will have to be released from prison, they will find a fertile ground for agitation. And we have to channelize their energy, that agitational energy, into administrative activities. So give them something to work with. Create a new Viceroy's Executive Council. Get them on board. Let them just focus on running the provincial governments and the Viceroy's Executive Council. So that was the plan which Wavell suggested, and they were working towards it. And things were going pretty well, because there was no agitation. After 1945, when the leaders were released in June, the Congress organization was broken. It had no organization. It had no plan. Gandhiji told the leaders, go back and do constructive work. And that is the time when the INA soldiers were being brought back and the elections were declared. So Congress got hand-delivered a ready-made issue, and Congress lapped it up. So what happened after that is well known. So no point in repeating that. But the point is that the INA, the huge nationwide upheaval that happened in response to the INA trials, including the response from the Indian soldiers in the British Indian Army, their sympathy towards the INA, the revolt in the Royal Indian Air Force, the revolt in the Royal Indian Navy, all these unnerved the British establishment to the extent where they had got a clear idea by that time. One only has to read the dispatches of the Viceroy, dispatches of Wavell to the home government, and the discussions that were taking place between the governors and Wavell, to understand to what extent they were unnerved. They were ready to leave. They had prepared emergency exit plans where, if things went out of hand, how the selected British officers and their families would be evacuated overnight. They were ready with such plans. That was the next extent of their nervousness. In February, a team of parliamentarians, British parliamentary MPs who were sent to India at the end of December and spent a month here, they went back and told Attlee that we have two options in front of us. Either we leave India immediately or be prepared to be kicked out. That is the feedback. And because of this situation, that is what prodded Attlee to send the cabinet mission. That was the first step. And then things moved fast. Anybody who says that it was the Gandhian movement which was responsible for India's freedom, I would ask him very politely, please tell me, name any Gandhian movement after 1932. If Gandhian movement was actually responsible for delivering India from the colonial rule,
Then what took them 15 years after the last Gandhian movement? There was no Gandhian movement in those 15 years. Where was any Gandhian movement? Rather, Gandhi had lost all his power of negotiation or his leverage after the at the end of the Second World War. He was sidelined. And so there is no question. Now, this thing that it was not the Gandhian movement, but the popular resistance, the popular movement, popular upsurge, which the Congress leaders exploited to the fullest extent, and then worked to suppress it once they got the assurance that the British are going to leave and the power is going to be delivered into their hands. They started suppressing these movements. They completely disowned the Quit India movement. They completely disowned the Royal Indian Navy. They completely disowned the INA soldiers. They exploited them to the extent only to serve their self-interest. Now, this is a very, what should I say? It's a very disheartening story for the establishment, for the Congress Gandhian establishment. And to override this whole fantasy of Gandhian movement was resurrected and a narrative created, which became the official narrative from the moment India, the Congress party came to power. And what Pandit Nehru said from the ramparts of the Red Fort on his first speech as a prime minister, that it is under Gandhiji's leadership that we have won independence. That became the official line and narrative, covering up everything else. So even with that, we went with both hands to grasp whatever came our way. We grasped dominion status, which the Congress had completely rejected after 1929. But when it came in the form of dominion status, we grabbed it. The Congress party was completely against joining the British Commonwealth. But when the time came, the Congress party dived into join the British Commonwealth. So everything that the Congress party had stood for during the years of the freedom struggle, at the time of grabbing power, transfer of power, they turned full 180 degrees and discarded all their previously held principles. So when independence came in 1947, 15th August, even the date was chosen a matter of shame not by Indian leaders, but by the Viceroy, last Viceroy, Mountbatten, because 15th August was the date of surrender of the Japanese government. It had nothing to do with Indian movement or Indian ethos anyway. So that way, it's only the date of transfer of power when the Indian Independence Act came into force. The declaration of Indian independence, when Indian independence was declared, was 21st October 1943. Or the intention that India, the Congress party and the Indian people are working for complete independence was made in 1929 on 31st December. So either of these two dates should be treated as India's Independence Day, or when India became a republic, treat that as the Independence Day. I cannot understand why a date of transfer of power should be celebrated as Independence Day, and when we have better alternatives available. So that's my point of view. Thank you for the blunt answer, sir. Also, over to you, Rohit ji. Kindly share. अभी चंद्रचूड़ जी ने जैसे बात करी, तो गांधीयन मूवमेंट को अगर आप क्लोजली ऑब्जर्व करेंगे, तो जैसे चंपारण का जो मूवमेंट हो या अहमदाबाद मिल मजदूरों की जो मूवमेंट हो, तो गांधीयन मूवमेंट की सबसे खास बात क्या थी कि वो हमेशा समझौतावादी था और हमेशा समझौते पे खत्म होता था। ठीक है, तो ये जो समझौतावादी प्रकृति जो है गांधीयन मूवमेंट की, तो पूरी तरह ये बात बोलना है कि गांधीयन मूवमेंट के थ्रू हमें इंडिपेंडेंस मिली, तो एक गलत बात होगी। और क्विट इंडिया मूवमेंट जो था, वो जैसे चंद्रचूड़ जी ने बोला, वो एक गांधीयन मूवमेंट नहीं था, क्योंकि अपने नेचर में एक वायलेंट मूवमेंट था। और हमें ये भी समझना होगा कि ये आईएनए और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की लेगेसी थी, जिन्होंने जिस
जिसने ब्रिटिशर्स को फोर्स किया भारत से निकलने के लिए, एक वोवेल का कोट था जो मैंने कहीं पढ़ा था कि आईएनए का जब ट्रायल चला रेड फोर्ट में, तो उसकी पॉपुलैरिटी इतनी ज्यादा बढ़ गई कि अब जो ब्रिटिश इंडियन आर्मी की जो सोल्जर्स हैं वो भी उनके साथ खड़े हो गए। और जो म्यूटिनी हुई थी, म्यूटिनी ने कहीं ना कहीं इस बात का डर डाला कि अगर भारत को वो नहीं छोड़ेंगे तो नहीं छोड़ेंगे तो कहीं ना कहीं डिफेंस और डिसऑर्डर, डिफेंस उनके हाथ से निकल जाएगा और भारत में डिसऑर्डर क्रिएट हो जाएगा। और इस बात ने उनके फोर्स किया कि वो भारत छोड़ के जाएं। तो जो प्रोविजनल गवर्नमेंट की जो स्थापना हुई, कहीं ना कहीं उसने भारत की, भारतीयों की जो मानसिकता या भारत की जो मानसिकता है उसके अंदर एक स्वतंत्रता का बीज बोने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। ठीक है। दूसरी चीज मेरा मानना है कि जो 21 अक्टूबर है, इसका इसको भारतीय इतिहास पे या भारतीय इतिहास में एक ऐसे दिन के रूप में याद किया जाना चाहिए जो इस बात को प्रदर्शित करे कि भारत भारत की स्वतंत्रता की जो मानसिकता है उसका उसकी उपज इस दिन से हुई थी, जब भारतीयों जब पहली बार इस बात की नींव रखी गई कि फ्री इंडिया भी अचीव किया जा सकता है, इंडिया की फ्रीडम भी अचीव की जा सकती है, ना कि गांधीयन मूवमेंट के थ्रू सिर्फ नेगोशिएट किया जाए। और 15 अगस्त मेरे ख्याल से ट्रांसफर ऑफ पावर के दिन पे, जैसे चंद्रचूड़ जी ने कहा, उसको उस रूप में देखा जा सकता है। पर 21 अक्टूबर को एक ऐतिहासिक और एक ऐतिहासिक दिन के रूप में उसको याद करना या उसको बनाया जाना चाहिए। जी, धन्यवाद रोहित जी। Also, we have Anuj Dharji with us. So just before you go to Anuj, just one point, a very short point. Actually 21 अक्टूबर का के फेवर में सबसे तगड़ा जो आर्ग्यूमेंट होता है ये कि पहले 1929 का जो लाहौर रेजोल्यूशन था डिक्लेयरिंग इंडिपेंडेंस एज अ गोल, दैट वाज अ गोल, but that was a long run without any time horizon or anything. एक गोल बनाया था जिसको लेकर सब everybody was not on the same platform और ये आगे पीछे होता रहा. But when 21st October, when Netaji formed the provisional government of Azad Hind and declared that it was going to fight for India's independence, he had a government, a provisional government and an army, and it was going to fight for India's independence and snatch India's independence. So 21st October उस हिसाब से देखेंगे तो is the most appropriate date which can be a substitute for 15th August. जी, thank you, Chandrachud ji. First of all, thank you Anuj Dharji for joining, and if you can kindly share views regarding the question, we will be pleased. Thank you. नहीं, अब शेयर करने के जितने सारे लाइक माइंडेड लोग इकट्ठे हो गए तो आई एम वेरी हैप्पी टू सी रोहित स्पीकिंग आवर लैंग्वेज। ये तो मुझे एकेडमिक्स में बड़ा सा उम्मीद कम ही है तो, लेकिन बट ये एक चेंज आ गया ना कि जितने यंग लड़के आ रहे हैं, सो प्रॉब्ली दे आर मोर ग्राउंडेड. ही वाज टॉकिंग अबाउट विलेज, यू कुड रिलेट. So that is one good sign, because when we were in colleges, we were also, we got to, history was coming to us through either teachers or books. Now people of, Rohit's age, even us, we are not that old as well. We are lucky that we have very vibrant social media and we have multiple ways to learn and see things. And the idea of declassification, for example, Chandrachud referred to, things that are happening. For example, when people talk about, the effect of the, Gandhian, movement on, British decision to quit India. Now, we made a survey of, multiple records, like beginning September 45 till about middle of 1946, the period when British took the decision to free in this country. And we were looking for in this correspondences and, and everything else, letters, from London to, from here to London to here. And in between the, various governors and all the top level people, the director of IB or others, we were looking for one phrase, one idea that कहीं पे भी हमको एक छोटी सी भी एक phrase मिल जाए कि किस गवर्नर ने, किस डायरेक्टर IB ने, या किस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने, या किस ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ने कहाँ पे ये लिखा है उस कंटेम्प्रेरी रिकॉर्ड्स में कि हम इंडिया को छोड़ के जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे धरनाबाजी चल रही है, अहिंसावादी मूवमेंट चल रही है. द आंसर इज नो.
उसमें कहीं मेंशन भी नहीं है। और द ओनली थिंग विच इज मेंशन एज चंद्रचूड़ एक्सप्लेन कि, और रोहित ने भी टच किया कि आईएनए का जो रिवोल्ट की जो उसकी वजह से जो आर्मी में रिवोल्ट की नौबत आ गई थी, और बॉवल के और लोगों ने मेंशन किया कि 90% सोल्जर्स, प्रोफेसर्स इनफैक्ट उसमें उनके फेवर में आ गए। और जो मूवमेंट चली है रेड फोर्ट में, जो ये पूरा ट्रायल चला था, पंडित जी ने खुद पब्लिक स्टेटमेंट दिए कि अंग्रेज अफसरों ने पैसे दिए, मतलब इंडियन को तो छोड़िए आप लोग, इंडियन तो दे रहे थे, अंग्रेजों ने भी पैसे दिए लगा के। पंडित जी का स्टेटमेंट है जी, पंडित जी ने बड़ी सी स्टेटमेंट दी है और वो सब फाइलों में रखी हुई है। तो ये हालत हो गई थी, और कोई उसमें हिंसा का कोई रोकदान नहीं है। इट्स हॉग वॉश, ये हमारे ऊपर लाद दी है क्योंकि उनको अपने आप को जस्टिफाई करना था, हम पावर में क्यों क्यों पावर में क्यों आए हैं। और वही बात जो रोहित ने बाद में बोली ना कि उनका ही कबाल जो आ गया, हिस्टोरियन का एक जमात आ गई है। और मेरा मानना है कि इसमें पूरा योगदान जो दिया है आपके जो ये ब्यूरोक्रेट्स जो हैं, ये आपके सिविल सर्वेंट, और पूरा ये जो आपका एलीट क्लास जो भारत की होगी, सिविल सर्वेंट हो गए, आईबी के लोग, आर्मी के लोग, क्योंकि ये अंग्रेजों के चमचों के मतलब ये मुखिया थे सारे, खासकर हमारे ये इंडियन आर्मी वाले। तो इन्होंने ही अंग्रेजों की चमचागिरी कर करके पूरा ब्रिटिश एम्पायर कंट्रोल कर रखा था, आर्मी वालों ने, पुलिस वालों ने, और आईसीएस जो थे ये। तो ये इनके इंटरेस्ट में था कि किसी भी तरीके से अंग्रेज को गाली मत दो ट्रांसफर ऑफ पावर के बाद में, क्योंकि इनका उस जमाने में मेन ऑब्जेक्टिव था कि अपने बच्चों को सेटल करना है इन्होंने विलायत में। क्योंकि उस टाइम तो अमेरिका का एवेन्यू इनको ओपन नहीं था, इन लोगों को यूरोप में जाना मुश्किल था। अमेरिका तो 60s में जाके खुला है। तो ये लोग सारे के सारे, आप कोई सर्वे रिसर्च कर सकता है, आप इनका रिकॉर्ड निकालो, जितने भारत के टॉप लोग थे उस जमाने में 47-48 में, उसके बाद में आज में किसी का भी पोता पाती भारत में मिल जाएगा, मैं नाम चेंज कर लूंगा अपना। सब लोगों ने 50s में अपना पूरा खानदान शिफ्ट कर दिया उन कंट्रीज में। तो उनको ये सूट करता था कि ये जो नैरेटिव जो गवर्नमेंट ने हमारे पे और ये लेफ्टिस्ट ने हमारे पे चेप दिया बाद में जाकर के कि अहिंसा की वजह से अंग्रेज चले गए, झूठ है, हमारे पे चेप आ गए। इसको प्रमोट करने में हमारी इलीट क्लास का बहुत बड़ा हाथ है, और इनफैक्ट वो इलीट क्लास इसको अभी भी छोड़ना नहीं चाहती, क्योंकि उसको इसका फायदा होता है, बिकॉज इवेंचुअली उनके एक पैर भारत में, दूसरा पैर उनका यूरोप अमेरिका में है। वहां पे तो कोई सुभाष बोस की बात सुनेगा नहीं, चाहे आप जो मर्जी आप कर लीजिए। तो वो उस वजह से ये प्रॉब्लम कंटिन्यू हो रही है। जिस दिन यूरोप अमेरिका में इनका नाम कटना शुरू हो जाएगा, ये सब लोग लाइन पे आ जाएंगे। तो हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम इनसे नहीं लड़ रहे हैं, हम लड़ रहे हैं एक इकोसिस्टम से जिसकी जड़ें यूरोप अमेरिका में बहुत सॉलिड है। और हम वो बातें बोल रहे हैं जो एक एवरेज व्यक्ति यूरोप अमेरिका में पसंद नहीं करेगा। ये इनकी स्ट्रेंथ है, अदरवाइज इनकी औकात नहीं है हमारे सामने खड़ी होने की। इनकी वही स्ट्रेंथ है, बिकॉज बड़ी सिंपल आम बोलचाल की भाषा में ये डिमॉन्स्ट्रेट किया जा सकता है कि अंग्रेज इनकी वजह से यहाँ से नहीं गए थे। और एक सवाल आपने पूछा, चंद्रचूड़ ने उसका आंसर आपको दिया, लेकिन मैं उसको हल्का सा ले पर्सन की भाषा में समझा दूं कि ये इंडिपेंडेंस मिली कब है हमको। तो 47 में तो ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ था। ट्रांसफर ऑफ पावर को कैसे बता देंगे फ्रीडम, मुझे पता नहीं है। उसके बाद इंग्लैंड का राजा हमारा राजा था। तो पहला ऑब्वियस में आता है कि हम 1950 26 जनवरी को जब हमारे को रिपब्लिक बना है कंट्री, दैट कैन बी द इंडियाज रियल एक्चुअल इंडिपेंडेंस डे। वैसे तो हमारा पर्सनल तो वही है, आज का दिन है। लेकिन अगर आज का दिन आप नहीं मानना चाहते, आपको प्रॉब्लम है, तो किस दिन को चुने? तो ऑब्वियसली इट वुड बी 26 उसका होगा, जनवरी होगा। लेकिन उसमें भी प्रॉब्लम निकल के आ रही है कि उसमें भी बहुत डिस्टर्बिंग डेटा निकल के आ रहा है कि इवन आफ्टर 1950 हमारी जो हरकतें थी वो गुलामों वाली ही थी। मतलब हमारा सारी फौज में तीनों दोनों तो कम से कम अंग्रेजी थे, हमारे नेवी चीफ भी अंग्रेज। अंग्रेज, मैं एंग्लो इंडियंस की बात नहीं कर रहा, अंग्रेजों की बात कर रहा हूँ। और आपके एयरफोर्स का चीफ भी अंग्रेज था। आई भी हमारी उनको रिपोर्ट कर रही है लंदन को जाकर के, बड़े साहबों को जाकर के। तो कौन सी इंडिपेंडेंट, ये किसी आजाद कौम का थोड़ी ना ये कोई सिम्टम्स होते हैं, तो गुलामों की कौम का है। तो शायद पता नहीं 55-56 में कभी जाके कोई ऐसा टाइम आया होगा जब भारत कंप्लीटली इनसे फ्री हो गया। लेकिन कम से कम 50 में बोलना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये तो पूरा का पूरा उनको इनको अंग्रेजों को सपोर्ट कर रहे थे। आई भी तो जाके 1968 तक उनको रिपोर्ट कर रही थी। जिस देश की अपनी ही एजेंसी, इंटेलिजेंस की जो मेन एजेंसी है, वो जाकर के किसी फॉरेन कंट्री के लोगों को रिपोर्ट करे, वो किस बात का इंडिपेंडेंट कंट्री हुआ? अब प्रॉब्लम ये है कि ये अपने आप में इतने खतरनाक विषय हैं कि कोई इस पर डिस्कशन करना नहीं चाहता, गवर्नमेंट किसी की भी आ जाए, क्योंकि नाक सबकी कटेगी, देश हमारा ही बदनाम होगा। जिन्होंने कांड करना था वो तो चलते बने, अपने बच्चों को सेटल करके अमेरिका यूरोप में ऊपर पहुंच गए वो लोग। अब जो है हम ये चीज़ गड़े मुर्दे निकालेंगे तो हमारे देश की नाक कटेगी। ऊपर से हमने भी इतना इन्वेस्टमेंट किया, पैसा बना लो के अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट कर दी वो गांधी ब्रांड के अंदर। अब कल को उसी ब्रांड की हवा हम निकाल दोगे तो नुकसान तो हमारा ही होगा ना। हम किस मुंह से क्या मुंह दिखाएंगे लोगों को? नाक तो हमारी कटेगी ना पूरी दुनिया के सामने
कि हम तो आपको पागल बनाया था, ये तो कोई ऐसी कोई सिम्टम नहीं है। तो ये प्रॉब्लम आ रही है, उसमें हम लोग फंस गए हैं। लेकिन मेरा जो थोड़ा सा हमें जो पॉजिटिव साइन दिखाई देता है कि भगवान, मैं तो सुबह शाम इनको दुआएं देता हूँ, भगवान भला करे अमेरिकियों का, इन लोगों ने ये सोशल मीडिया बना दिया, इंटरनेट बना दिया कि उसकी वजह से आप और हम लोग बात कर सकते हैं आपस में। नहीं तो हमको तो, हम लोगों ने, आप लोग तो दोनों छोटे हो, आपने तो देखा नहीं, हमने वो दूरदर्शन का और एक चैनल का जमाना देखा हुआ है। हमें पता है कि हमने क्या दिन बिताए हैं। आप तो बहुत लकी हो कि आप ऐसे टाइम में पैदा हो गए, कम से कम इस तरह कि आप जूम में बातें कर सकते हो, ये कर सकते हो। भगवान ना करे अगर ऐसी घटना, अगर ऐसा ये 1950-60 के दशक में अगर ऐसी फैसिलिटी होती, तो आईबी वाले आपके पास जासूसी मार के आपको घर से उठा कर ले आते सुबह कि आपकी तेरी हिम्मत कैसी बात करने की किसी फॉरेन में किसी आदमी के साथ में, विदेश या विदेश में कई जगहों पे। तो ये प्रॉब्लम आ रही कि अब मेरा मानना है कि जो नई जनरेशन आ रही है उसमें, और उसमें फर्क पड़ रहा है। दे आर अंडरस्टैंडिंग थिंग, दे आर मोर प्रैक्टिकल। और उस कॉन्टेक्स्ट में मुझे जो हल्का सा आज खुशी इसको रोहित को देख के हुई है कि कम से कम जी, क्योंकि ये 10 साल बाद तो ये प्रोफेसर बनेगा, ये जाके बच्चों के दिमाग में वहाँ पे चाबी देगा। तो आज हमें चाहिए कि अब जो है ऐसे लोग जो है वो बने प्रोफेसर, और ताकि ये लोग जो पूरी सिस्टम में जो हमारे इन्होंने जहर भरा हुआ है 50-70 साल से, वो ये निकालें। और भगवान की दया से मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में, मुझे बहुत उम्मीद है कि बहुत से डॉक्यूमेंट डिक्लासिफाई होंगे विदेशों के अंदर, इंग्लैंड अमेरिका में, यहाँ भी हो रहे हैं, लेकिन कुछ खास हमारी निगाह में है वो बाहर होने वाले होंगे, होने चाहिए, हमारी उम्मीद तो है। तो शायद आने वाले 10-12 सालों में लोगों को और अच्छी समझ आ जाएगी चीज़ों की। और जैसे जैसे टाइम के It's nice to have Rohit on the panel here, but मुझे थोड़ा सा इस बात की डिसअपॉइंटमेंट है। मैंने बोला था कि ऐसे किसी को ले आइए जो काउंटर पॉइंट रखे, ताकि थोड़ा सा तो लड़ाई होनी चाहिए, मजा आए, लड़ाई का हाँ। तो मजा आए, तो वो तो थोड़ा हमारे आर्गुमेंट का तो मजा आए। सपोर्ट में, हमारे सपोर्ट में निकल, हमारे इकोसिस्टम का निकला डायरेक्टली। तो ये कि सिचुएशन ना चेंज थोड़ी होगी, थोड़ा सा मतलब वो होगा। और आज कोई चंद्रचूड़ से भिड़ने की कोशिश कर रहा था इस बारे में कि ये क्लेमेंट एटली जो है ये, और ये शायद मैं बात रोहित को फ्लैग करना चाहता हूँ कि ये हमें कई ऐसे जमूरे मिलते हैं जो हमको कहते हैं कि साहब क्लेमेंट एटली साहब ने जो बातचीत भरे, इनफैक्ट वो भी आज के दिन बाद, बड़ा हिस्टोरिक दिन है। आज के दिन क्लेमेंट एटली भारत में आए थे 1955 में। आज ही के दिन में उनकी कलकत्ता में मुलाकात हुई थी फणिभूषण चक्रवर्ती, जो गवर्नर थे, एक्टिंग गवर्नर थे और चीफ जस्टिस थे कलकत्ता हाई कोर्ट के। आज ही के दिन उन्होंने शायद इसी टाइम पे हम बातचीत कर रहे हैं, तो शायद इसी टाइम पे उन्होंने पूछा होगा, और इसी टाइम पे उन्होंने बोला कि इंडिपेंडेंस में पूरा मैं आई वॉज, जो भी हुआ सुभाष बोस की वजह से, और महात्मा गांधी का रोल उसमें मिनिमल था, उसकी उनकी उनकी मूवमेंट्स का। अभी लोगों ने मुझे 3-4 लोग मुझे मिल गए, उन्होंने कहा जी इसका कोई, आप तो ये तो हियर से है। मैंने कहा भैया तुमने ये एक जो वर्ड पढ़ लिया ना अंग्रेजी में, हियर से वियर से, ये जरा सोच समझ के यूज करना। अगर आप इसको हियर से बोलोगे तो फिर मैं आपकी पूरी इतिहास की किताबें निकाल निकाल के मैं पूरी गांधीयन मूवमेंट को ना इंडियन एविडेंस एक्ट के हिसाब से जज करूंगा। फिर आप मुझे ये बताओ कि जब गांधी जी को रेलगाड़ी से धक्के मार के निकाला था साउथ अफ्रीका में, तो तुम लोगों ने क्या उसके आईफोन से वीडियो बनाए थे क्या? तुम्हारे पास में क्या प्रूफ है जो मैं कोर्ट में जाकर ले जाऊं, दिखाऊं कि ये साबित हुआ कि है? क्या एविडेंस है? कौन सा आई विटनेस अकाउंट है? किस आई विटनेस ने जाकर के कोर्ट में स्टेटमेंट दी उसके बाद में? तो भूल के भी ये वर्ड यूज मत करना हियर से कि क्या है। तुम्हारी पूरी की पूरी हिस्ट्री हियर से बेस्ड है, पूरी की पूरी हिस्ट्री, पूरा एविडेंस है। फणिभूषण चक्रवर्ती जो है, तुम्हारे 50 हिस्टोरियंस जो 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 सरकार के पैसे पे नौकरी चलाते थे, उनसे ज्यादा क्रेडिबल आदमी है। वो कौन था पहले जान लीजिए, उसने रिटर्न में रिकॉर्ड छोड़ा है उस आदमी ने, उसकी क्रेडिबिलिटी। बहुत लोग बोलते हैं कि इतना टाइम क्यों लगा, पहले क्यों नहीं बोला। बात यह है कि 56 में ये हुआ है, 56 में हुआ है। उन्होंने इमीडिएटली आरसी मजूमदार को चिट्ठी लिखा, आरसी मजूमदार ने अपने किताब में वो छापा, फैक्सिमिली वो चिट्ठी छापा हुआ है properly, and that book was published in 1959. No, 70. No, Chandra, if correct me if I'm wrong, the book was published in 78. The first edition was probably in 59. Okay, if I remember it correctly. Okay. Then you check because that will be new information to me. Otherwise, इन्होंने पहली बार 1960 में, पहली बार तो उस जमाने में वो था नहीं, कोई YouTube तो था नहीं, ट्विटर था नहीं, कैसे बोलता बेचारा वो, सिस्टम हॉस्टाइल था, ही वाज स्टिल सर्विंग। वो जब रिटायर हुए, मेरे ख्याल से 60 के आसपास रिटायर हुए थे, तो उन्होंने 60 में ही उन्होंने नेताजी रिसर्च ब्यूरो में जब उनका लेक्चर हुआ, उन्होंने वो जाके बात बोली है, ऑल इंडिया रेडियो ने उसको रिकॉर्ड करके उस क्वेश्चन को सेंसर कर दिया। तो ये बात उन्होंने अपने उस लेटर में मेंशन करी हुई है। तो वो बेचारा बोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मजबूरी है कि वो ऐसे स्थान पे रहता था कलकत्ता में जहाँ पे गांधी भक्तों का बोलबाला था। तो क्या बोलता बताइए, मैं खुद अगर आप मुझे उठा के कल को भेज दो जेएनयू के अंदर, तो मेरी भी तो बोलती बंद हो जाएगी ना।
कि बोलूंगा तो मेरे को जूते पड़ेंगे यहाँ पे। उस बेचारे ने बोला है, लेकिन ऑल द सेम फनी भूषण चक्रवर्ती की जो स्टैंडिंग है वो किसी भी इन ये जो कोर्ट हिस्टोरियन से ज्यादा क्रेडिबल सोर्स है। हम तो सोर्स पे चल रहे हैं, वो सोर्स बहुत क्रेडिबल है। इन एनी केस उसकी स्टेटमेंट को सपोर्ट करने के लिए बहुत सा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस बाहर आ चुका है। जैसे कि मैंने बोला कि आप मुझे दिखा दीजिए कि कौन से अंग्रेज ने कब ये बात बोली है, मतलब छोटा मोटा नहीं चाहिए मुझे। जो सिस्टम के अंदर था, आईबी के डायरेक्टर नॉर्मन स्मिथ जो 10 साल तक या उसके ऊपर आईबी का यहाँ हेड रहा है भारत के अंदर, और वही गया है यहाँ पे 46 के आसपास में, वही था। नॉर्मन स्मिथ ने कहाँ लिखा है, किस रिपोर्ट में लिखा है कि गांधी जी के अहिंसा के चक्कर में हम लोग कंट्री छोड़ के जा रहे हैं? मैं आपको नॉर्मन स्मिथ की रिपोर्ट दिखाऊंगा, उसमें वो आईबी वो बात कर रहा है कि सुभाष बोस की आईएनए की वजह से आर्मी के अंदर हालत खराब हो चुकी है। तो किसकी बात है ये? तो ये एक पॉलिटिकल जुमलेबाजी है, इन्होंने हमारे सिर पे डाल दी है। और इसको इम्प्लीमेंट करना, एनफोर्स करना, इसको कंटिन्यू करने में हमारी सिविल और ये मिलिट्री के जितने लोग हैं, जिन्होंने अंग्रेजों को हमारे सिर पे लादा था, और जिसमें से 50% को वॉर क्रिमिनल बना करके इनको गोली मारनी चाहिए थी 47 में, जो हमने नहीं मारी है, ये उसका हम लोग भुगत रहे हैं। और इसलिए हमारे सिर पे ये पड़ गया। प्रॉब्लम ये है कि ये नैरेटिव को अगर हम उखाड़ फेंकते हैं तो ये नैरेटिव यूरोप अमेरिका में जड़े इसकी बहुत मजबूत हो गई। तो वो प्रॉब्लम आ रही है कि हम लोग ये उनके कंधों पे रख के हम पे बंदूक चलाते हैं। तो ये प्रॉब्लम आ रहा है कि आप एक लेवल से आगे, जैसे वो जो आपने हिटलर की बात की थी, उसमें 50,000 आपको एग्जाम्पल दिया जाएगा कि कोयले की दलाली में सबके हाथ काले हैं, लेकिन आप एक आदमी का नाम ले रहे हो कि उसने गलत काम किया। तुमने नहीं किए थे क्या? हमने नहीं किए क्या? कौन सी दुनिया में ऐसी लड़ाई हुई है जहां वॉर क्राइम्स नहीं हुआ? हम लोगों ने भी हाथ साफ किए। जापानियों पर आप लोगों ने एटम बम फेंके, आपने उनके पर दुनिया भर के वॉर क्राइम्स किए। पूरी जर्मनी में वर्ल्ड का बिगेस्ट हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड में गैंग रेप हुआ है। फिर वो उसमें कौन इन्वॉल्व था? तो पॉइंट ये कि अपने गिरेबान में झांक के देखे नहीं और बैठ के दुनिया जहान भर के लेक्चर दे रहे हैं कि साहब उसने ये किया, उसने वो किया। हमारी नेशनल सिक्योरिटी आज की दुनिया जो है, पूरा वेस्टर्न यूरोप, वेस्टर्न कंट्रीज पुतिन को वॉर क्रिमिनल बताती है। क्या हमारे लिए, आपके लिए वॉर क्रिमिनल है वो? नहीं। क्या हमारे लिए सदाम हुसैन एक गलत आदमी था? नहीं। भाई हमें हमें दोनों हमारे दोस्त थे, दोनों हमें सपोर्ट करते थे कश्मीर में। तो दैट इज हाउ इट इज, दिस इज हाउ द वर्ल्ड वर्क्स। आज जो बैठ के लोग जिस जिस बेसिस पे हम लोग इसराइल को सपोर्ट कर रहे हैं, that is precisely the basis on which we defend Subhash Bose's role with regard to what he did with Axis past. That's how it is. So anyhow, but as I said, I'm happy to note, to see Rohit, and it gives me a lot of, bit of optimism that maybe in time to come, things will change in the, academia, and we will have more, teachers who probably can inculcate these kind of, right visions to the students. So that's what I, would have to say. It has been Yeah, I just checked. It's confirmed. The Arzi Hukumat-e-Azad's autobiography came. The first edition was 1959. So that is even more stronger evidence in that case. So then the argument that he wrote very late is nonsensical. He actually informed Majumdar right the very moment it happened. So that is even stronger argument now. Thank you. It's been a great discussion. Sir, okay. अनुज सर की बात में मैं एक अपना क्विक एक्सप्लेन जोड़ना चाहता हूँ। तो हम लोग दिल्ली में देखते हैं कि बहुत सारे जो छात्र हैं वो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। तो जो मॉडर्न हिस्ट्री की जो तैयारी करते हैं, मॉडर्न आधुनिक इतिहास का जब वो अध्ययन करते हैं, तो एक विपिन चंद्रा की किताब आती है आधुनिक भारत, इंडिया स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। और विपिन चंद्रा के बारे में अरुण शौर्य ने साफ साफ लिखा है कि ICHR जो कि एक मार्क्सिस्ट डोमिनेटेड ऑर्गेनाइजेशन था, उसने करोड़ों रुपए फंड किया विपिन चंद्रा और बाकी लोगों को ताकि वो एक कांग्रेस पार्टी का इतिहास लिखें, और उसी को एक ऑथेंटिक बुक बना के करिकुलम में उसको इंक्लूड किया गया। इवन जो लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनको क्या पढ़ाया जा रहा है कि कांग्रेस के अराउंड नेशनलिस्ट मूवमेंट हुआ है, बाकी लोगों का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था, आप लोगों को अंडरमाइन किया। और क्योंकि मेरा संबंध प्राचीन भारत के इतिहास से है, तो तो मेरा पूरा रिसर्च जो है वो आइडेंटिटी फॉर्मेशन के बारे में है। तो जब मैं अपना रिसर्च कर रहा था तो मेरे मन में पहला सवाल ये आया कि हम लोग हमेशा हर किताब में पढ़ते हैं या कोई भी व्यक्ति कभी तैयारी कर रहा हो तो उसको बोलता है कि बुद्धिज्म और जैनिज्म, उसको हम सेमिटिक रिलीजन बोलते हैं, उनका उद्भव हुआ था ब्राह्मणिज्म के अगेंस्ट में, ये बोला जाता है। बट आप जब डिटेल में जाएंगे तो ये बुद्धिज्म जैनिज्म का ऑरिजिन ब्राह्मणिज्म के अगेंस्ट में, तो आप कहीं ना कहीं ये भी देखेंगे कि ये जो पैटर्न है, ये मॉडल है, ये पूरा यूरोप से बोरो किया गया है। कैथोलिक रिलीजन के अगेंस्ट में प्रोटेस्टेंट रिलीजन आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो इंडिया का इतिहास है, भारत का जो इतिहास है, वो कहीं ना कहीं उसी फ्रेमवर्क को, उसी पैरामीटर को फॉलो कर रहा है जो यूरोप में सेट है।
तो आप जो है यूरोपियन हिस्ट्री के मॉडल को, उसको पैरामीटर्स को आप इंडिया में अप्लाई कर रहे हैं और इंडिया का इतिहास को उसी पे आप फ्रेम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपके पास खुद की एक जो मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन है, कहीं ना कहीं उन्होंने एक फॉरेन मॉडल को अपनाया, उसको इंडिया में इंप्लीमेंट किया, उसके पैटर्न में हिस्ट्री राइटिंग करी। तो इंडिया में कई सालों तक इंडिक अप्रोच एग्जिस्ट ही नहीं कर, इंडिक अप्रोच थी पर उसको स्पेस ही नहीं मिला। जैसे आरसी मजूमदार की बात की गई अभी, तो अगर हम दिल्ली यूनिवर्सिटी का सिलेबस उठा के देखें किसी भी आधुनिक विश्वविद्यालय का, तो आरसी मजूमदार जैसे जो राइटर है उनकी राइटिंग्स को ऐसा बोला जाता है कि दे आर ओल्ड टेक्स्ट बुक, सो वी शुड फोकस ऑन न्यू रिसर्च। और न्यू रिसर्च का मतलब क्या है? मार्क्सिस्ट हिस्ट्री राइटिंग्स, तो उसको पढ़िए। दूसरी चीज ये कि तो ये जिस हिसाब से आप एक दूसरा क्वेश्चन आता है कि भारत में जो कई लोग जिसे पढ़ते हैं टेक्स्ट बुक में, कि इंडिया में जो पहला टेक्स्ट था जिसको हम लोग हिस्ट्री बोल सकते हैं, इट वाज राज तरंगिणी ऑफ कल्हण इन कश्मीर। बट अगर टेक्निकली अगर डिटेल में जाए, जो हिस्ट्री का जो पूरा नोशन है, ये सारा का सारा यूरोप से बोरो किया गया है। तो एंशियंट इंडिया में लोग भाट होते थे, चारण होते थे, पुराना इतिहास का ट्रेडिशन था, पुराण थे, सब उसको अंडरमाइन करते हैं, उसके रूल को आप हाईलाइट नहीं करते। तो कहीं ना कहीं जो आपकी इतिहास की विचारधारा है, उसका एक पूरा फ्रेमवर्क या मॉडल है, वो कहीं ना कहीं आप लोगों ने बोरो किया यूरोप से, और उसी पैरामीटर को, उसी मॉडल को आप इंडिया में चिपका रहे हैं। तो आपने एक डिबेट कर ली जैनिज्म, बुद्धिज्म और एमर्ज अगेंस्ट ब्राह्मणिज्म। फिर आपने डिबेट करी कि फ्यूडल डिबेट है, यूरोप में भी फ्यूडलिज्म था तो इंडिया में फ्यूडलिज्म था। तो आप उसी पैरामीटर्स को फॉलो कर रहे हैं, और ये पैरामीटर्स हम लोगों को मॉडर्न टाइम में देखने को मिलते हैं। तो अगर मॉडर्न टाइम में उन लोगों को लगता है कि एक नेशनलिस्ट, अगर अगर इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली है तो वो मिली है एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी के बदौलत, जैसा वो इटली के संदर्भ में, बाकी कंट्रीज के संदर्भ में स्टडी करते हैं। बट अगर आप जो रिसेंट की जो सबाल्टर्न स्टडीज आ रहे हैं, उन्होंने क्या बोला कि कोई भी जो नेशनलिस्ट मूवमेंट होता है वो किसी एक पार्टी या किसी एक इंडिविजुअल के एफर्ट्स का आउटकम नहीं होता, इट हैज बीन शेप्ड बाय द मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन है, उनको कभी भी इस पर्टिकुलर फ्रेमवर्क में स्पेस नहीं दिया गया है। क्योंकि आप, मैंने कहा ना थोड़ी देर पहले, कि आप जितने भी आप संगठन बना रहे हैं जहाँ पे आप बोलते हैं कि हम लोग लेजिटिमेट हिस्ट्री लिख रहे हैं, तो लेजिटिमेट हिस्ट्री का मतलब क्या है? कि जो मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस परमिट कर रहे हैं अपने इंस्टीट्यूशंस में, या जो मार्क्सिस्ट टीचर क्लास में पढ़ा रहा है, तो आप एक क्लास में अगर एक काउंटर आर्गुमेंट लेके आते हैं तो आपको आर्गुमेंट को एक्सेप्टेंस नहीं मिलेगी। अगर आप वो आर्गुमेंट बोल रहे हैं तो आपसे बोला जाएगा नो, जस्ट ब्रिंग द प्राइमरी सोर्स, देन वी विल एक्सेप्ट योर आर्गुमेंट्स। तो जो सेट जो फ्रेमवर्क है उसको तोड़ना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर हमें हिस्ट्री का जो एक एस्टेब्लिश्ड फ्रेमवर्क है, उससे बियॉन्ड अगर हमें देखना है या स्टडी करना है। उसमें रोहित, अब ये अच्छा जो चेंज, मतलब आई जस्ट बिग वन लास्ट स्टेटमेंट, उसमें अच्छी चीज हो रही है, आपने इंडी का नाम लिया, ये सब होगा। ये अब ये एडवांटेज कुछ साल से हो रहा है कि जिस तरीके से फॉरेन में, खासकर यूएस में, इंडियन कम्युनिटी के लोग प्रमोट कर रहे हैं इंडिक थॉट्स को, इंडियन स्टडी को, दैट हैज बीन वेरी वेरी बेनिफिशियल। तो इनकी तोड़ वहीं से होगी मार्क्सिस्ट की, बिकॉज यहाँ होता है कि ये हमारे सामने आकर के यूरोप के मॉडल दिखाते हैं, वो सुन के यहाँ पे लोग को इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स पैदा हो जाता है। तो उसमें ये अब एडवांटेज हो रहा है कि हमारे ही लोग, अब जितना अच्छा काम वहाँ पे हो रहा है इसको लेकर के, डिस्कशंस को लेकर के, पॉइंट्स, तो मेरे ख्याल से इंडिक थॉट को जो सपोर्ट सिस्टम स्पेशली अमेरिका से मिलता है, I mean, उससे उससे तो आई थिंक दैट इज समथिंग व्हिच विल गो नाउ कंप्लीटली गो अगेंस्ट देम। एंड आई फोरसी कि इन द नेक्स्ट 5-6 10 ऑलरेडी हमारे जो इंडियंस हैं या इन पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन हैं, स्पेशली इन अमेरिका, उन्हें ऑलरेडी बहुत नैरेटिव को ओवरटर्न करने में उनका बहुत बड़ा हाथ है। मेरे को लगता है आने वाले टाइम में उनका हाथ और बढ़ेगा, और ये आई थिंक विल बी गुड फॉर आवर कंट्री एंड आवर सिविलाइजेशन, कि ये जो झूठ हमारे को पड़ेगा। और आपने एक लार्जर इशूज रेज किए, नॉट जस्ट अबाउट सुभाष बोस, नहीं, गोइंग बैक टू द हिस्ट्री स्टार्ट टू द एंड। तो इसमें इंडिक थॉट्स में और इंडिक मूवमेंट जो रिवाइवल जो हुआ करके, इसमें भारत के लोग, भारत के भारतीय मूल के लोग या भारत के सिटीजन अभी भी जो हैं, वो जो खासकर अमेरिका में है, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में और कुछ बड़ी कंट्रीज में, ये इनका योगदान बहुत जबरदस्त है और होने वाला है। कुछ टेकअवेज हम ले सकते हैं इस डिस्कशन से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू स्टार्ट रीडिंग हिस्ट्री बुक्स। तो चंद्रचूड़ जी और अनुजधर जी जैसे लोग, दे आर ब्रिंगिंग ट्रू हिस्ट्री टू अस। तो उनके बुक्स मैंने, मतलब लिंक्स में मैंने डाले हैं चैट्स पे, सो आप देख सकते हैं, यू कैन बाय देयर बुक्स। एंड ऑल्सो वी नीड टू स्टार्ट सेलिब्रेटिंग 21st of October लाइक वी डू, जैसे 15 अगस्त हम सेलिब्रेट करते हैं, वी नीड टू सेलिब्रेट ऑल्सो 21st of October, बिकॉज
जैसे अगर हम ये मान रहे हैं, डिस्कशन हो रहा है कि 21 अक्टूबर को इंडिपेंडेंस डे घोषित करना चाहिए या फिर उसकी तरफ ट्रांसफर ऑफ पावर को इंडिपेंडेंस डे नहीं कहा जाना चाहिए, तो वी नीड टू आल्सो सेलिब्रेट 21 अक्टूबर। सिर्फ डिस्कशन हो गया, खत्म हो गया, सिर्फ ये चीज नहीं होनी चाहिए। ऑल्सो जो एकेडमिक रिफॉर्म्स की बात कही रोहित जी ने बहुत अच्छी, कि लेफ्ट लेफ्ट एकेडमिया ने पूरा डिस्कोर्स को पूरा जकड़ के रखा हुआ है, जिससे हमें उस चीज को बाहर निकाली है, हम हमारी एकेडमिक्स को हमें बाहर निकालनी है। तो एक एकेडमिक रिफॉर्म हमें चाहिए इस देश में। सो it has been a great discussion. Thank you everyone. Thank you especially to Chandrachud ji, Rohit ji and Anuj Thar ji. Thank you. Thanks a lot. And also thank you to everyone for listening patiently and for joining this मैं event. एक पॉइंट मैं ऐड करना चाहूंगा बिफोर यू एंड, जस्ट वन वेरी ब्रीफ पॉइंट। ये आपने जो बोला कि हम सबको सेलिब्रेट करना चाहिए, इट इज मोर इम्पोर्टेंट देन परहैप्स यू रियलाइज, क्योंकि नेताजी रिलेटेड कुछ भी हो, the celebration and the institutionalization will not come from the government. No government has ever done anything to institutionally establish Netaji's achievements or things related to him. कभी एक साल में कोई एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर लिया, स्टैम्प निकाल दिया, या फिर फ्लैग होस्टिंग हो गया, that's a separate matter. But everything else, be it his role in getting India her independence or about the question of his mysterious disappearance, whatever, it has to be done at the level of the people. It will not be officially recognized or be sponsored. तो इसलिए दिस इज ये और भी ज्यादा इसकी अहमियत है कि लोग इकट्ठे होकर मिलकर इस पे चर्चा करें, बात करें, काम करें जो होना है। बिकॉज नेताजी इज ओनली वन एग्जाम्पल, वन ऑफ द रेयरेस्ट एग्जाम्पल, जहां पे इंस्टीट्यूशनली सप्रेस्ड होने के बावजूद he has lived in people's mind, in public memory, and people celebrate him to this extent. I don't think there is any other example जहां पे कोई पावरफुल बैकिंग ना होते हुए भी इतने सालों तक, तो इतने सालों तक इतना ज्यादा लोगों के मन में छाए हुए हैं। और कोई एग्जांपल मेरे जहन में तो नहीं है, बट दिस इज द इंडिकेशन that only people, we have to carry it forward and it has to be done at the level of the people. थैंक यू। तो फिर अब इस इवेंट को फिर यहाँ समाप्त किया जाए। बहुत वंडरफुल डिस्कशन वी हैड एंड थैंक यू टू एवरीवन। Thank you. नमस्ते। Jai Hind. जय हिंद।